है याद करने का डर। अब सब कुछ है ब्रेन में प्रैक्टिकल है ये EduMantra का असर। अब मैथ्स हो या कोई न्यूमेरिकल मैं झट से सॉल्व कर जाऊंगी क्योंकि मेरे पास है। Hello, good evening, everyone. Good evening. Now, without wasting any further time, let us begin with our sample paper. है ना? यहाँ सब लोग अभी सैम्पल पेपर सॉल्व करने आए हैं. लेट अस बिगिन विद आवर सैम्पल पेपर. और सैम्पल पेपर है आपका बिल्कुल क्वेश्चन पेपर जैसे. यू नो अबाउट दैट. सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है. सेक्शन ए 2 क्वेश्चंस पैसेजेस. फर्स्ट पैसेज इज द डिस्कर्सिव पैसेज. पैसेज पढ़ना नहीं है, पहले यू विल गो ऑन टू रीड योर क्वेश्चंस. ठीक है. Why does the author refer to acta senatus? Answer this question. You have options. You can see the question. What is the answer for this question? Why does the author refer to acta senatus? Find this word in the given passage. देखो यहाँ पे कोई पैसेज का पैराग्राफ का रेफरेंस नहीं है. हमने यहाँ पे पैराग्राफ डाला हुआ है फॉर आवर कन्वीनियंस, ताकि हमें यहाँ से इजीली मिल जाए. नहीं तो मुझे ऐसे पीछे आपको जाके यहाँ पे ढूंढ बोलना पड़ेगा टू फाइंड आउट. ठीक है. दैट्स व्हाई वी हैव पुट हियर द पैराग्राफ इटसेल्फ. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ए बी सी डी में से क्या है आंसर? वेयर इज एक्टा सेनेटस? हियर इज एक्टा सेनेटस, which contained a summary of the debates that were held in Roman Senate. These were the first public announcements shared by a king. They were the first newspapers. They were summary of the debates that were held in Roman Senate. Yes, option C is the correct answer, and I can see everybody is giving the answer option C. Very good. Next, according to the author, the fact that the earlier synopsis of the Senate proceedings were discontinued at the behest of some senators have an analogy in modern times, which is acta diurna, editing, newspapers, censorship. क्या है ये? What is the correct answer here? Discontinued earlier synopsis. But some government officials were dissatisfied with this arrangement. They began objecting to the common people, knowing too much about them, and the news bulletins were discontinued. And news bulletins were discontinued. In the present day, such a measure would be termed as censorship. Would be termed as censorship. The answer is option D, censorship. It is D, not C. Okay? Yes. Next, select the option that displays what the Bengal Gazette wanted to project with reference to its tagline: a weekly political and commercial paper open to all parties but influenced by none. But influenced by none. तो इस tagline को आप क्या नाम दोगे? क्या ये डाइवर्सिटी एक्सप्रेस कर रही है, न्यूट्रलिटी एक्सप्रेस कर रही है, इंसुलैरिटी या डुअलिटी? A weekly political and commercial paper open to all but influenced by none expresses neutrality. Is it clear, everyone? Influenced by none expresses neutrality. Okay? Okay. Next. Complete the following with a word or phrase from paragraph 2. Here is paragraph 2. इस question में reference है paragraph 2. Paragraph 2 में से कोई word या phrase आपको for this use करना है. That which establishes an antecedent. A word or a phrase which will mean that which establishes an antecedent. Large news sheets were produced and this was a precursor of today's newspaper. Establishes an antecedent मतलब जो पिछले times में use हुआ करता था. So, precursor of today's newspaper was large news sheets. पिछले time में use होता था तो newspapers का
प्रीकर्सर क्या है न्यूज़पेपर्स का, एंटीसीडेंट क्या है लार्ज न्यूज शीट्स. द आंसर इज प्रीकर्सर हियर. Yes. Okay. The writer says that the early newspapers in the 16th century were printed on large news sheets. Which social strata did they cater to? राइटर ने बोला है ना कि 16th सेंचुरी में न्यूज़पेपर्स वर प्रिंटेड on large news sheets, है ना. We can see here. Which social strata did they cater to? The first newspapers, as we think of them, began in the 16th century, but these papers contained mainly commercial news. Okay, it was only later that political news began appearing in newspapers, and that too when it had a direct impact on commerce and trade. They catered to traders and commercial establishments. Or you can write commerce and trade. Yes, commerce and trade will also do. Okay. Next, based on your reading of the text, list two reasons why the British presidency keeping a close watch on news about them turned out to be a vain effort. दो रीजंस देने हैं वाई ब्रिटिश प्रेसिडेंसी का बहुत ज्यादा ध्यान देना ऑन न्यूज कोई ज्यादा फायदा उससे नहीं हुआ. What could be the two reasons? Paper contained advertisement. Okay. They jailed James Hickey, the owner of Bengal Gazette. They could not stop the birth of other newspapers. तो उनका न्यूज पे ज्यादा ध्यान रखना कि क्या प्रिंट हो रहा है क्या. इट वॉज ऑल इन वेन क्योंकि दैट वॉज नॉट इन देयर कंट्रोल एनी मोर. उन लोगों ने भले ही जेम्स हिकी को प्रिजन में डाल दिया बट दे कुड नॉट स्टॉप द बर्थ ऑफ अदर न्यूज पेपर्स. क्या हो गया डिगी ठाकुर व्लॉग्स, क्या हो गया. डिजी ठाकुर व्लॉग्स क्या हो गया आपको. कैन यू जस्ट लीव इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड. Okay. What connection does the writer draw out between the relaying of news and governments before the newspapers came into their own in India? Yes, yes. What connection does the writer draw out between the relaying of news, relays of runners, relaying of news, and governments before the newspapers came into their own in India? ग्रामर का होगा ए बी, ग्रामर के सेशन भी होगा इसके बाद. ग्रामर का हम एमसीक्यूज लेंगे. डोंट वरी. Urgent news and news writers. Okay.
The relaying of news existed even during the Mughals. दोनों के बीच में कनेक्शन बताना है, रिलेइंग ऑफ न्यूज और गवर्नमेंट बिफोर द न्यूज़पेपर्स के बीच में रिलेशन. तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अर्जेंट न्यूज वाज कैरिड बाय रिलेज ऑफ रनर्स एंड इन द टाइम ऑफ द मुगल्स न्यूज राइटर्स केप्ट द एम्परर इन्फॉर्म अबाउट कंडीशन इन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो मुगल्स के टाइम पे भी रिलेइंग ऑफ न्यूज एग्जिस्ट करता था. हु हैड रनर्स, ये न्यूज कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती थी, विद द हेल्प ऑफ रनर्स एंड न्यूज राइटर्स टू कीप देम इन्फॉर्म अबाउट द हैपनिंग्स इन द एम्पायर. ठीक है. The news sheets that were introduced in the British presidency in Calcutta and Madras were not meant for general circulation. Which word matches with this statement? आपको इसके लिए पैराग्राफ में रेफर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस ये स्टेटमेंट देखो. जो न्यूज शीट्स थी ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में जिनको इंट्रोड्यूस किया था इन कैलकाटा एंड मद्रास, वर नॉट मेंट फॉर जनरल सर्कुलेशन, मतलब वो जनरल लोगों के लिए नहीं थी. तो उसको क्या कहोगे? इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, सेंसर्ड, कॉम्प्रिहेंसिव, क्या कहोगे? Yes, very good. Option B. People are selecting option B. Very good. It is exclusive. जब वो जनरल पब्लिक के लिए, जनरल सर्कुलेशन के लिए नहीं था, ओनली फॉर particular group of people, it is exclusively for them. Okay, yes. Supply 1 point to justify the following. The Portuguese had another motive in their minds when they imported printing press in India. इस बात के लिए एक पॉइंट सप्लाई करनी है. यू हैव टू गिव जस्ट 1 point to for this statement. The Portuguese had another motive in their minds when they imported printing press in India. जब पोर्चुगीज ने इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस किया, इंपोर्ट किया, यहाँ पे उसको लाया, उसकी शुरुआत की, तो उनके दिमाग में कुछ दूसरे, they had another motives in their minds. उनके दिमाग में कुछ अलग आइडियाज थे. What was that? Portuguese. The technology of printing began in India when Portuguese Jesuit priests imported the first printing press in 1550 and used it to publish religious books and leaflets to spread Christianity among people. What was his main idea of Portuguese Jesuit priests? They wanted to publish religious books and leaflets to spread Christianity among the Indian people. है ना? That we can directly see in the paragraph. Calcutta, arrange the following events in the chronological order. अभी यहाँ पे कुछ events हैं जिनको आपको chronological order में लगाना है. अब वो 1 2 3 4 सीरीज में करेक्ट होगा, 4 3 2 1 में है, 3 4 1 2 में है या 3 4 2 1 में है. कौन से सीरीज में करेक्ट है वो बताना है. कैलकाटा जनरल एडवाइजर, न्यू न्यूज़पेपर्स, रिलेज ऑफ रनर्स एंड न्यूज राइटर्स ड्यूरिंग मुगल्स, रिलीजियस बुक्स एंड लीफलेट्स टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी. तो सबसे पहले था रिलेज ऑफ इन द 16th century. ये 16th century का है ना. रिलेज ऑफ रनर्स एंड न्यूज राइटर्स ड्यूरिंग मुगल्स, सबसे पहले ये है. 3 रिलीजियस बुक्स एंड लीफलेट्स टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, पोर्चुगीज ने लाया था. नेक्स्ट इज दिस 3 4. देन कैलकाटा जनरल एडवाइजर एंड देन न्यूज़पेपर्स 3 4 1 2. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एंड आई कैन सी बहुत लोगों ने ऑप्शन सी भी सेंड किया है. ठीक है. एंड विद दिस फर्स्ट हमारे पैसेज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. डिस्कर्सिव पैसेज के सेकंड पैसेज इज फैक्चुअल पैसेज, जहां पे यू गेट अ डेटा. यहाँ पे हमारे पास बार ग्राफ है. हियर आर द क्वेश्चंस. इन्फर वन रीजन फॉर डिमोनेटाइजेशन. यू कैन सी दिस पैसेज इज अबाउट डिमोनेटाइजेशन. सो वन रीजन, you have to give one reason for demonetization. Demonetize refers to an economic policy where a certain currency unit ceases to be used as a legal tender. It occurs whenever there is a change in the national currency. The existing form or forms of money is pulled from circulation and retired to be replaced with new notes or coins. So one reason for demonetization, what can you say? This is a direct question. इसका आपको पैराग्राफ में आंसर मिल जाएगा, पैसेज में आंसर मिल जाएगा. One reason for demonetization is, yes, one of the reasons for demonetization is the change in the national currency, which you can see, change in the national currency. Okay.
Based on your understanding of the passage, choose the option that lists the objectives of demonetization. In demonetization, the existing form of money is pulled from circulation to be replaced with new notes. हमने ये already पढ़ लिया. 1, हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, पैसेज के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन बताने हैं. तो फर्स्ट तो है कि डिमोनेटाइजेशन से जो एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ मनी है उसको पुल आउट कर लिया जाता है फ्रॉम द सिस्टम एंड इट इज रिप्लेस्ड विद न्यू नोट्स. जो हमने ऑलरेडी ये चीज एनकाउंटर कर ली है, हमने ये चीज देख ली है. डिमोनेटाइजेशन हैड अ सीवियर इंपैक्ट ऑन द गोल्ड मार्केट. नो. डिमोनेटाइजेशन एलिमिनेट्स ब्लैक मार्केटिंग. ऐसा कुछ भी पैसेज में नहीं है. डिमोनेटाइजेशन इरेडिकेट्स मनी लॉन्ड्रिंग. Demonetization helps to retain a cashless economy. Yes, 1 and 5, option A, and I can see option A, 1 and 5. Very good, everyone. Okay. Complete the following analogy correctly with a word from paragraph 4. Paragraph 4 is here. Awful, dreadful, serious का क्या होगा? Just like awful is a synonym of dreadful. Awful synonym है dreadful का. वैसे ही serious is a synonym of which word from paragraph 4? Paragraph 4 में कौन सा word है which means same as serious? Demonetization had a severe impact on the gold market. The extraordinary demand for the yellow metal made a stiff hike in the cost. However, the government made it mandatory that every buyer had to submit his or her PAN card details for purchases made. Erring jewelers were brought to book. Severe, yes, very good. The answer is severe. The synonym for serious from paragraph 4 is severe. Okay. Which of the following is not a mobile wallet company? अभी I think for such a question आपको तो refer करने की भी जरूरत नहीं है paragraph. Out of the options you can tell मोबाइल वॉलेट कंपनी कौन सी नहीं है. फ्री चार्ज, ओला मनी, पेटीएम, सैमसंग. विच इज द करेक्ट आंसर? अगर आप यहां पे भी देखो, अदर ऑल्टरनेटिव्स वर मोबाइल पेमेंट सिस्टम्स लिंक टू ई कॉमर्स बिजनेसेस लाइक ओला मनी, फ्री चार्ज, फ्लिपकार्ट वॉलेट, फ्री चार्ज, फ्लिपकार्ट वॉलेट. yes, the answer is option D, Samsung. Very good. Select the chart that appropriately represents the growth in volume in rupees in 3 financial years: 2015-16, 16-17, 17-18. 15-16, 16-17, 17-18. ये 3 years में कैसा पैटर्न रहा है of growth in volume of rupees? कैसा पैटर्न रहा है out of these given graphs? Which will be the appropriate one? A, B, C, D. Which will be the appropriate one, everyone? Yes, it is A. It is option A. The pattern in this graph and in these years is the same. Smallest, middlest and the highest. Okay? Next. Fill in the blank by choosing the correct option. Government's goal was to eradicate dash. Government's goal was to combat India's thriving underground economy on several fronts. Eradicate counterfeit currency, fight tax evasion, eliminate black money accumulated from money laundering and terrorist financial activities. Financing activities. Okay. Counterfeit currency, black money, both A and B. The answer is option C, both A and B. You can see counterfeit currency है and black money. To eradicate counterfeit currency and also to eradicate, eliminate, both are same, black money. Substitute the word combat with one word and similar in meaning with the in the following sentence from paragraph 3. The government's goal was to combat. You can see the government's goal was to combat India's thriving underground economy. अभी आपको यहाँ पे combat का synonyms देना है. At such places आपको combat का synonyms देना है, which you won't get from the passage, from the paragraph. You have to give
Okay, fight, very good. Fight, eradicate, battle. Okay, fight, battle, overcome, yes, resist. All these are the words which can give you marks. ठीक है, इनमें से कोई भी वर्ड्स होंगे तो दे आर इनफ टू गिव यू 1 mark. Okay. List any 2 points on which the Indian government thrive to combat underground economy. कोई भी 2 points देना है जिसके थ्रू 2 points on which the Indian government thrive to combat underground economy. Very simple. हमने ये already ये question देखा है ऐसा. 2 points देना है. The government's goal was to combat India's thriving underground economy on several fronts. Eradicate counterfeit currency, fight tax evasion, eliminate black money accumulated from money laundering and terrorists. आप इसमें से कुछ भी 2 points लिख सकते हो. It will be very easy to write eradicate counterfeit currency, fight tax evasion. Okay? Yes, fight tax evasion, eradicate counterfeit currency. Yes. List one reason why the government decided to demonetize the 500 and 1000 rupee notes and not any other. एक रीजन देना है क्यों गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू डिमोनेटाइज 500 के नोट्स एंड 1000 रुपी के नोट्स और कोई अदर नोट्स को नहीं किया. व्हाई द डिमोनेटाइज्ड 500 एंड 1000 रुपी नोट्स. आज हमारे बीच 500 का नोट और 1000 रुपीज का नोट नहीं है. व्हाई? The Indian government decided to demonetize the 500 and 1000 rupee notes, the two biggest denominations in its currency system. These notes accounted for 86% of the country's circulating cash. With little warning, India's Prime Minister Narendra Modi announced to the citizens that these notes would be rendered immediately ineffective with immediate effect. Yes, 500 and 1000 rupees notes accounted for 86% of country's circulating cash. Hence, by doing so, the government would be able to demonetize the two biggest denominations in its currency system. By discontinuing these two notes, these two amounts, these two rupees, क्या किया? सबसे बड़ा denominations उन्होंने currency system में से निकाल दिया and they introduced new ones. Okay, yes. Now, select the option that titles paragraph 3 to 5, 3, 4, 5 appropriately with reference to the information in the text. अभी यहाँ पे paragraph 3, 4, 5 है. Here are the options. What do you think the answer should be? थर्ड पैराग्राफ को क्या टाइटल होना चाहिए, फोर्थ को क्या होना चाहिए, फिफ्थ को क्या होना चाहिए? लेट अस सी. द गवर्नमेंट्स गोल वाज टू कॉम्बैट डिमोनेटाइज 500 एंड अभी हम पूरा यहाँ पे पैसेज नहीं पढ़ सकते हैं, पूरा नहीं पढ़ सकते हैं. 500 एंड 1000 रुपी नोट्स कहाँ पे हैं? कहीं भी नहीं है. तो 500 एंड 1000 रुपीज वाला नहीं आएगा. दिस ऑप्शन वोंट बी देयर. combat underground economy, yes. Combat underground economy. Severe impact on the gold market. Severe impact on the gold market. Then alternative payment methods. Alternative payment methods. है ना? तो option B is the correct answer. Yes. Very good. Grammar. सेक्शन ए इसके साथ आपका खत्म हो जाएगा. 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द फर्स्ट पैसेज, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द सेकंड पैसेज. देन ग्रामर सेक्शन में यू विल बी हैविंग टोटल 12 क्वेश्चन. 12 में से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 10. इस बारे में सबको पता है. 12 में से कोई भी 10 क्वेश्चन आपको करने हैं. ओके. फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. दिस time tomorrow I dash on the beaches of Hawaii away from the noise of civilization. This time tomorrow I will lie on the beaches. I will be lying. I will be lying. I would have lied.
आई विल बी लाइंग, बी सी दोनों लगभग सेम है, बट यहाँ पे स्पेलिंग का डिफरेंस है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आई विल बी लाइंग, बिकॉज दिस लाइंग इज करेक्ट. Herman said, if I were a king, I would travel all over the world. Pulkit said, you are just daydreaming, my friend. Herman said that if he had been a king, he would travel all over the world. Pulkit, on hearing his friend, commented that इसके आगे बस आपको ये convert करना है. That you will change to, बस ये दो words आपको convert करना है. You are, you just have to convert you are. बाकी का same आएगा. Just daydreaming will be the same. You are की जगह क्या आएगा? That he was just daydreaming. Very good. Aesthetic. Aesthetic ने सबसे पहले आंसर किया. Aryan is next. He was just daydreaming. You are changes to he was just daydreaming remains the same. यहाँ पे ड्रीमिंग का स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग है. ओके, next. Over the past 30 years or so, the quality of many people's lives dash some respect because of technological progress. Select the correct option to fill in the blank for the given line from an environmental magazine. Again, ये magazine है. Which option is the correct option? Over the past 30 years or so, the quality of many people's lives has deteriorated. Very good. Perfect tense में होगा, present perfect tense में होगा, and according to the subject it is singular, has deteriorated. ठीक है, आपको बस यहाँ पे यही देखना था कि ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है कि सिंगुलर है. had deteriorated, had worsened नहीं, मतलब past perfect. अभी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. It is still there, the effect is still there. Over the past 30 years or so, the quality of many people's lives has deteriorated some respect because of technological progress. Okay. So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio, but without any more fuel in my tanks? In this line there is an error and you have to correct that error. What is the error? यहाँ पे एक पर्सन है जो बोल रहा है कि किसने मुझे हेल्प किया. अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो ये है ब्लैक एरोप्लेन में से. दिस लाइन इज फ्रॉम ब्लैक एरोप्लेन. So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? But की जगह and आएगा. Option C. Okay. Worse still, much of our building effort dash into the construction of more and more large office blocks at the expense of much needed housing for the growing urban population. Much of our building effort has been channeled, have been channeled, are channeled, were channeled. Worse still, much of our building effort yes, it's option A, has been channeled. Again, आपका subject is singular. एंड ऐसे जो सेंटेंसेस हैं जो कुछ स्टेट कर रहे हैं समथिंग जस्ट लाइक अ रिपोर्ट, इट्स ऑल्सो साउंड्स लाइक अ रिपोर्ट, यहाँ पे हमेशा आपका प्रेजेंट परफेक्ट होगा. नेक्स्ट. थ्रू द कॉलम्स. अब यहाँ पे एक लेटर का पार्ट है, a part of a letter जहाँ पे you have to complete it. Through the columns of your reputable newspaper, I wish dash the people aware of the growing need for alternate sources of energy and the advantages of solar power. Make का कौन सा फॉर्म यहाँ पे आएगा? To make. Very good aesthetic. It's to make. Through the columns of your reputable newspaper, I wish to make. I wish to announce. Okay, to make.
Let us go and look at the school ground, said the sports teacher. Are we going to play the final match today? Asked the students. When the sports teacher invited the students to have a look at the school ground, they asked him. अब यहाँ पे आपका connector क्या होगा? This is a question. What will be the connector here, everyone? They asked him. उसके बाद this is the verb, this is the subject. तो आपका subject पहले आएगा, then the verb. They asked him if we will change to they, are will change to were. If they were going to play the final match, today will change to that day. Yes, if या whether, whatever. If की जगह आप whether भी लिखो, fine. They were going to play the final match that day. Okay, if they were going to play the final match that day. Today changes to that day. Achha. The weather was too risky for neither any movement in the sky or on land. What will be the answer here? The weather was too risky for neither any movement in the sky or on land. यहाँ पे और है, यहाँ पे what will change? Yes, nor नहीं आएगा, neither की जगह either होगा. The weather was too risky for either any movement in the sky or on land. Either or होगा यहाँ पे, neither nor नहीं होगा. The first word here will get changed. Okay? Child, let us go out and see the solar eclipse. Parent, don't look directly at the sun. Wear your tinted glasses. A child suggested his parent that they should go out and see the solar eclipse. The parent advised him, don't look directly at the sun. कैसे होगा इसका conversion? What will be the answer here? Advised him. Imperative sentence है. Imperative sentence में what will be? Yes, not to look directly. Phonetics plays. Not to look directly at the sun and wear his tinted glasses. Okay? Sun directly. Okay, very good. And हमको यहाँ पे दिया है at the place of this full stop, and then you have to continue converting this wear his tinted glasses. Yes, okay. I left my purse at home. Dash, you lend me $100. I left my purse at home. Should you lend me $100? Could you lend me $100? May you lend me $100? Or shall you lend me $100? क्या होगा आंसर? I left my purse at home. Yes, option B. Could you lend me $100? Very good. Okay. I said I'm not going to school. Mother said, okay, finish all the household chores today and I will rest. So when I told mother that I am not going to school, same hoga. That when I told mother that I am change होगा किसमें? I am not going to school same रहेगा. I were not going to school. I will not be going to school. I shall not be going to school. I were not going to school. Option B is the correct answer. और कोई भी ऐसा नहीं है. She told me to finish all the household chores and that she would rest. That I will rest. I will change to she, will change to would rest. Please pay your parking fee before existing.
What is the error here? Identify the error on a signboard in a parking lot and supply the correction. Parking lot में एक signboard है, please pay your parking fee before exiting. Yes, error is existing and the correction will be exiting. Yes, very good. इसी के साथ 12 questions of grammar खत्म होते हैं, जिसमें से आप 10 करोगे, कोई भी 10 करोगे जिसमें आप बहुत श्योर हो, वो 10 करोगे. ओके ओके. उसके बाद आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स शुरू होता है, क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन चालू होता है. योर स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स. यू आर हाईली मूव्ड बाय द वायलेंस ऑफ द रूल इन द वीकली मार्केट्स. अभी आपने देखा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया है और आप बहुत ज्यादा, आपको बुरा लगा है ये देख के कि इस रूल का वायलेंस हो रहा है वीकली मार्केट्स में. मतलब प्लास्टिक बैग्स का बहुत यूज हो रहा है वीकली मार्केट्स में. यू आर अमरजीत, अ रेसिडेंट ऑफ वेव सिटी गाजियाबाद. तो आपको आपका एड्रेस मिल गया, वेव सिटी गाजियाबाद. राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द ट्रिब्यून. द एडिटर, द ट्रिब्यून. रिसीवर्स एड्रेस मिल गया. नेक्स्ट नीचे आएगा गाजियाबाद. इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स, ड्रॉइंग अटेंशन टुवर्ड्स harm caused by law offense and also aware people about the need of the hour. ठीक है, तो वेव सिटी गाजियाबाद B12 आपने अपनी तरफ से एक इमेजिनरी एड्रेस ऐड कर दिया, द हाउस नंबर और द रोड नंबर. ठीक है, B12 वेव सिटी गाजियाबाद. एनी इमेजिनरी नेम. द एडिटर, द ट्रिब्यून गाजियाबाद. सब्जेक्ट कंसर्निंग वायलेंस इरप्टेड पोस्ट प्लास्टिक बैन. दिख रहा है सबको? सर, दिस इज योर सैल्यूटेशन, जस्ट सर, और कुछ नहीं, सिंपल SIR सर. थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड डेली. ज्यादा मत सोचो अभी, अगर आपने कुछ याद नहीं किया है. बहुत बच्चे अभी भी बोल रहे हैं कुछ पढ़ा नहीं है मैम, क्या करें. लेटर के लिए बस इतना करो, ये एक लाइन याद रखो. थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड डेली, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द, I would like to draw your attention towards the, इतना याद रखो. उसके आगे जो भी आपका क्वेश्चन है वो ऐड करो. towards the, हमारा यहाँ क्वेश्चन है violence erupted across the state post ban on single plastic use. Dozens of supermarket staff in Ghaziabad have been attacked by customers after single-use plastic bags were banned in supermarkets. One shopper even put his hands around a worker's throat. Some customers threw their shopping on the floor, shouting abuse at staff, and one man even put his hands around a shop assistant's throat when he found out that he would not be getting free bags. ठीक है? Other shoppers vented their anger by shouting slogans and burning effigies. It was really heart-wrenching to see all that, but I don't want to hurt the sentiment of those who protested and would like to make a humble request that damaging government's property is actually damaging our property. This country belongs to us and we need to respect and safeguard the assets provided to us by the government. But I don't find any reason to shout slogans and hurl abuses. Everyone should know that plastics give rise to toxic and dangerous fumes and gases which can potentially cause cancer in humans. It is hazardous to animals as well. So before creating any furore, introspect and react. Hope you raise my opinion in your esteemed newspaper. आप ये फर्स्ट लाइन और ये लास्ट लाइन इतना तो याद करके जा सकते हो. उसके बाद जो आपका आएगा बॉडी में आपको लिखना है, वो आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अपना डेटा फॉर्म करना है, अपना लेटर फॉर्म करना है. देन योर्स सिंसियरली, यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, इट इज योर्स सिंसियरली अमरजीत सिंह. अमरजीत सिंह कहाँ से आया? फ्रॉम योर क्वेश्चन. यू आर अमरजीत सिंह. ठीक है. रिस्पेक्टेड सर लिखने की जरूरत नहीं है. रिस्पेक्टेड सर तो बहुत पुराना हो गया. उसके बाद डियर सर लिखा जाता था, अब वो भी नहीं है. अब सिर्फ सर, जस्ट सर. Okay, you are Reena Raju of 85. If you are a girl, you will write Reena. If you are a boy, you will write Raju. 85 Ramesh Nagar, New Delhi. यहाँ पे आपके पास पूरा एड्रेस है. You have come across a poster promoting social distancing.
अभी आप न्यू दिल्ली में रहते हो और आपने एक पोस्टर देखा है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में अवेयरनेस है, उसको प्रमोट किया जा रहा है। अब एक लेटर लिखना है इन 100 to 120 वर्ड्स टू द जनरल मैनेजर DTC complaining about violation of advisory on social distancing in buses in your area and urging him to take urgent steps in this matter. ओके आपने अपना सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, डेट लिख दिया, रिसीवर्स एड्रेस द जनरल मैनेजर DTC सेट फायर डांस अकेडमी, हाँ नहीं नहीं, जनरल मैनेजर DTC न्यू दिल्ली बस। सब्जेक्ट वायलेशन ऑफ एडवाइजरी ऑफ सोशल डिस्टेंस इन बसेस प्लाइंग इन राजनगर एरिया। ओके ऑर्डर लेटर नहीं आएगा, ओके जस्ट सर I would like to draw your attention to the violation of advisory on social distancing in buses plying in Rajnagar area. The government has issued an advisory on the social distancing in buses to control the spread of coronavirus. To slow down the rate of disease transmission in the community, social distancing in buses must be maintained in letter and spirit. As per the advisory issued by the government, proper distancing, regular service of the buses and their proper disinfection must be ensured. It is brought to your notice that none of the above advice is being followed in our area. The service of buses is neither regular nor sufficient. The buses are not regularly sanitized. I therefore request you to look into matter and take urgent remedial actions. ये आप next line से लिखो. Your closing sentence, this could be more buses should be put on the road. Implementation of the advisory is the need of the time. Okay, you are giving your suggestions, you are expressing your concern. Okay, placing order वाला लेटर नहीं आएगा, you will get such type of letter only. ठीक है, लेटर टू द एडिटर टाइप में ही आएगा, इस पे ज्यादा सोचना नहीं है. नेक्स्ट इज योर एनालिटिकल पैराग्राफ. ओके ठीक है, अभी तक सबको क्लियर हो गया जो हमने किया? अच्छा, मैंने ना एक और चीज देखी है, बहुत बच्चे बोल रहे हैं एग्जाम हॉल लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस में. ऐसा नहीं लिखना है. आपको पता नहीं किसने बोल दिया है एग्जामिनेशन हॉल लिख देना है सेंडर्स एड्रेस में. ऐसा बिल्कुल नहीं करना बच्चों. एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन सेंटर बिल्कुल नहीं लिखना. मैंने कई कमेंट्स में ऐसा पढ़ा कि आपको ऐसा बोला है. ऐसा बिल्कुल नहीं करना. डोंट मेक दिस मिस्टेक. ओके, ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है आपको. अगर एड्रेस यहाँ पे क्वेश्चन में है, जो मोस्टली आएगा ही, क्वेश्चन में एड्रेस आएगा ही. अगर एड्रेस में नहीं है, क्वेश्चन में एड्रेस नहीं है, तो आप अपने मन से कोई इमेजिनरी एड्रेस, 2 लाइन का तो बस आपको एड्रेस लिखना होता है. आप यही याद कर लो, 85 रमेश नगर न्यू दिल्ली, यही याद कर लो. अगर हैदराबाद है क्वेश्चन में हैदराबाद, गाजियाबाद है गाजियाबाद, वट एवर इट इज. ओके, नाम लिखना है, XYZ नहीं लिखना है. अगर क्वेश्चन में नाम नहीं है, यस ABC, हाँ आई हैव हर्ड ABC एग्जामिनेशन हॉल, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना है. दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. इसको सीधा देख के यहाँ पे आपको एक एक स्टेप पे मार्क्स मिलने वाला है. यहाँ पे ऐसे 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 करेक्शन होगा. अगर आपने यहाँ पे ऐसा किया, ये डायरेक्टली इनकरेक्ट हो जाएगा अगर आपने इस फॉर्म में लिखा तो. ओके, एनालिटिकल पैराग्राफ एक ही पैराग्राफ में लिखना है. ये भी एक और क्वेश्चन है, एक ही पैराग्राफ में लिखना है, 3 पैराग्राफ्स में नहीं लिखना है. उस एक पैराग्राफ में 3 सेक्शंस होंगे, इंट्रोडक्शन, योर मेन बॉडी एंड द कंक्लूजन. Okay, the chart shows the division of household tasks by gender in Great Britain. While write an analytical paragraph describing the chart given in not more than 200 words. Cleaning, baking, washing up, cleaning, house tidying, gardening, pet care, care of own children and play, maintenance, odd jobs, clothes, washing, ironing, sewing. मेल्स का रेड कलर है, फीमेल्स का ब्लू कलर है. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस डेटा यू हैव टू क्रिएट योर एनालिटिकल पैराग्राफ. ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले
एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिखी है, आपको ऐसे 3 पैराग्राफ्स में नहीं करना है, बट आपको समझाने के लिए यहाँ पे 3 पैराग्राफ्स है, आपको लिखना सब कंटिन्यूएशन में ही है. ओके. The chart shows the number of minutes per day spent by British men and women in doing household task. तो हमने क्या किया है, चार्ट शोज यही बातें लिख दी हैं. क्या हम हमारे पैराग्राफ को हमारे क्वेश्चन के साथ लिंक कर रहे हैं विद दिस इंट्रोडक्शन. आप ऐसे लिख सकते हो, तो द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ मिनट्स पर डे स्पेंड बाय ब्रिटिश मेन एंड वुमेन इन डूइंग हाउसहोल्ड टास्क. Okay, on an average the women spend about 4 hours doing household tasks, whereas the men spend less than 2.5 hours. ठीक है. On an average women spend about 4 hours and men spend less than 2.5 hours. ठीक है. The task on which women spend more time than men include cooking, cleaning house, taking care of the children and laundry. You can see जहाँ पे ब्लू ज्यादा है, आप देख सकते हो कुकिंग में ज्यादा टाइम स्पेंड करती हैं, और क्लीनिंग में, हाउस टाइडिंग में, केयर ऑफ ओन चिल्ड्रन एंड प्ले, उसके बाद क्लोथ्स वॉशिंग एंड आयरनिंग. जहां भी ब्लू ज्यादा है वो विमेन का है. तो आप वुमेन के काम के बारे में बता रहे हो कि विमेन ये सब चीजें ज्यादा करती हैं कंपेयर टू मेन. In doing all these tasks, women spend approximately 200 minutes, which is almost 3 times the time spent by men in these tasks. Okay. On the other hand, men spend twice the time than women in doing tasks like gardening and maintenance of odd jobs in the house. यहाँ पे आप देख रहे हो रेड का बार बड़ा है, मेंटेनेंस ऑफ जॉब्स, गार्डनिंग, पेट केयर में बड़ा है ग्राफ बार. Men spend the highest time, almost 50 minutes in gardening and pet care, while the women spend only 30 minutes for these tasks. The time spent by men in washing, ironing and sewing clothes is as low as 2 minutes per day as opposed to 25 minutes spent by women. ठीक है. आपने इस तरीके से पूरे अपने सारा डेटा, बस आपका ये पैराग्राफ आप देख रहे हो किसमें फॉर्म हुआ है, सारा डेटा को एक्सप्लेन करने में फॉर्म हुआ है, डेटा को इन वर्ड्स में इंटरप्रेट करने में फॉर्म हुआ है. In short, women spend far more time doing household chores than men, whilst men prefer to do gardening, pet care and maintaining odd jobs. आपको पैराग्राफ में कोई 1 लाइन का गैप भी नहीं देना है. पैराग्राफ में 1 लाइन का गैप कैसे दोगे, कंटिन्यूएशन में लिखना है पूरा, बिल्कुल कोई गैप्स नहीं देने हैं इसमें. ओके. एक ही पैराग्राफ में लिखना है, कोई लाइंस भी नहीं छोड़नी है. Next, write a paragraph on the topic air pollution in 100 to 120 words. Take the hints from the picture given below. आपको यहाँ पे पिक्चर मिली है, उसके साथ में कुछ hints भी हैं. Hints क्या है? मोबाइल सोर्सेस जो एक जगह से दूसरी जगह मूव होती हैं, कार्स, बसेस, प्लेन्स, ट्रक्स एंड ट्रेन्स. स्टेशनरी सोर्सेस जो एक ही जगह फिक्स्ड है, जो मूव नहीं हो सकती हैं, जैसे पावर प्लांट्स है, ऑयल रिफाइनरीज है. इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज एंड फैक्ट्रीज. दूसरे अदर सोर्सेस जो एयर पोल्यूशन फैलाते हैं आर प्लास्टिक वेस्ट, डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा. ओके. So air pollution is the pollution of the gaseous layer that surrounds us. It is mostly caused by carbon emissions from burning of fuel from cars, plastic and industrial smoke. Deforestation is another main cause of the air pollution. It means the mixing of harmful gases like nitrogen oxide in the air that we breathe in, thereby causing us to fall sick. Air pollution is a big threat to mankind as it has led to the depletion in ozone layer, which is responsible for locking the carbon dioxide on the earth. Air pollution needs to be fought against as it might lead to the extinction of life on earth. It can be prevented by controlling the carbon emissions by vehicles and preventing harmful industrial smoke from mingling into the air. आपने पूरा एयर पोल्यूशन के बारे में बता दिया, हाउ यू कैन कंट्रोल इट, हाउ इट इज हार्मफुल. नो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में कोई लाइन गैप नहीं करना है, सब कंटिन्यूएशन में आएगा वो. ओके. ग्रेटेस्ट नॉलेज. नाउ वी बिगिन विथ आवर सेक्शन सी, लिटरेचर. लिटरेचर में फर्स्ट जो आपको क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस है. फर्स्ट 2 ऑप्शन है बिटवीन प्रोज, नेक्स्ट 2 ऑप्शन है बिटवीन पोइट्रीज.
ओके तो ये प्रोज के ऑप्शंस है, एक्सट्रैक्ट्स हैं जहां पे आपको एक्सट्रैक्ट से आंसर करने हैं कुछ क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस हो गए, 5 मार्क्स। ओके 5 मार्क्स फॉर प्रोज, 5 मार्क्स फॉर पोइट्री। ओके आपको ये दिख रहा है, ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में से है, बेकर फ्रॉम गोवा। ओके बेकर फ्रॉम गोवा का है। इन गोवन विलेज व्हाट आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड बोल। गोवन विलेज में विदाउट स्वीट ब्रेड बोल क्या मीनिंगलेस होता है? मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड बोल, bread known as bowl. So what is the answer? Birthday parties, holy celebration, wedding gifts, all the occasions. क्या है? It is C, option C, wedding gifts. Yes. State whether the following statement is true or false. Cakes and bolinas are compulsorily prepared during Christmas in Goa. Cakes और bolinas compulsorily prepare किए जाते हैं during Christmas. Cakes and bolinas are a must for Christmas. तो is it true or is it false? क्या कहोगे आप इसको, true या false? Cakes and bolinas are compulsorily prepared during Christmas in Goa. Yes, true. Very good. It is true. Find the word in the extract which means celebration meal. अभी आप डोंट थिंक आपको उसमें एक्सट्रैक्ट में ढूंढने की जरूरत है, वेर यू हैव ऑप्शंस। सेलिब्रेशन मील का मतलब क्या होगा आउट ऑफ दीज वर्ड्स? चार्म, ओकेजन, एंगेजमेंट, फीस्ट। सेलिब्रेशन मील कौन सा होगा इनमें से? चार्म, ओकेजन, एंगेजमेंट, फीस्ट। यस ऑप्शन डी, इट इज फीस्ट। दावत, सेलिब्रेशन मील, पार्टी की मील जहां पे सब लोग बैठ के एक साथ खा रहे हैं, या इट इज अ फीस्ट। ओके व्हाट इज मस्ट फॉर अ लेडी ऑफ गोवा एंड ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट? व्हाट इज मस्ट फॉर अ लेडी ऑफ गोवा ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट? गोवा में अगर किसी की बेटी की शादी है तो उस लेडी को, द मदर, व्हाट शी हैज टू डू? शी मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस, शी मस्ट क्लीन द हाउस, शी मस्ट फीड 7 चिल्ड्रन, शी मस्ट परचेज एनी गोल्ड आइटम। Yes, she must prepare sandwiches. Option A is the correct answer. What does the lady of the house prepare on the occasion of her daughter's engagement? घुमा फिरा के एक ही जैसा सवाल है. What does the lady of the house prepare? Sandwiches. Yes, the answer is just sandwiches. Very good, Ricky Saharia. Yes. Next is a question of trust में से this extract is there. A question of trust. Horace Danby. Infer one reason for the following based on information in extract. Horace was sneezing. Horace को छींक आ रही थी. एक रीजन देना है for his sneezes. Why was he sneezing? He was suffering from hay fever. Yes, he was suffering from hay fever. He was sneezing due to a prior infection. Yes, you can also write he was suffering from hay fever. Hay fever also is the correct answer from this question. Yes. Which magazine could have published the article mentioned in the given extract? अभी इस extract में एक article mentioned है. A magazine article had described the house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. तो जो article में mention था, it was the interiors of the house. plan था और describe, घर को describe किया गया था, सब rooms का और पूरे घर का प्लान था और उस रूम का पिक्चर था. तो व्हाट इज द आंसर? कौन सा मैगजीन होगा? पॉज एंड क्लॉज, आउटडोर्स एंड लैंडस्केपिंग, इंटीरियर्स या द इन्वेस्टर? यस, ऑप्शन सी, इंटीरियर्स. वेरी गुड. राइट. चूज द इमेज दैट करेक्टली डिस्क्राइब्स द ऑप्शन ऑफ द सेफ based on the given extract. Now, do you know where the safe was?
The writer had even mentioned that the painting hid a safe. Matlab, it was on the hall, it was on the wall behind a painting. So, which image correctly depicts this information? Option A, B, C, or D? Yes, it is option C. The image 3. In the line, before he could think, Horace said, "Hey fever." The response was, हमने देखा ना, किसी ने तो ऊपर से बोला, "What is it?" What is it? A cold or hay fever? डोरवे से आवाज सुनी होरेस डैनबी ने, क्या है ये, कोल्ड है या हे फीवर है? तो होरेस ने विदाउट एनी थॉट एकदम वहां पे आंसर कर दिया, आई कांट से दैट वर्ड, हे फीवर। तो उसको क्या कहेंगे? वॉज इट रिहर्स्ड? क्या उसने वो चीज बोलने की प्रैक्टिस की थी? क्या वो स्पॉन्टेनियस और नेचुरल था? इट वॉज ऑन द स्पॉट? क्या वो हेजिटेंट था या वो रैपिड एंड होस्टाइल था? व्हाट इज द आंसर? It is option B. Yes, he was spontaneous and natural. Write a line from the extract that can be considered an example of sarcasm. Write a line from the extract. अभी आपको extract में से एक line select करनी है और लिखनी है जिसको आप as an example of sarcasm बोलोगे. What could be that line out of this extract? What could be that line out of this extract? Yes, you can cure what could be that line? सार्केज्म विल मीन कि क्या उसने मजाक किया, कुछ मॉक करने का कोशिश किया, मॉकरी की, या सम, ओके, व्हाट विल बी दैट sentence? I think you would better see a doctor if you are serious about your work. मतलब she is presenting herself as the owner of the house and she is asking the thief there to see a doctor अगर वो अपने काम से serious है तो the sentence will be, I think you would better see a doctor if you are serious about your job. Okay? इसी के साथ 5 क्वेश्चंस एंड होते हैं. हमने 2 देखे, अ बेकर फ्रॉम गोवा एंड क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. नेक्स्ट इज पोइट्री. देयर विल बी 2 पोइट्रीज अगेन. यहाँ पे पोइट्री के किसी एक सेट ऑफ क्वेश्चन को आंसर करने का यू विल गेट 5 मार्क्स. ओके, ये फर्स्ट पोइट्री है, द बॉल पोएम. ओके, व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी? The epistemology of laws, how to stand up. He is learning well behind his desperate eyes. The epistemology of laws. तो epistemology का आपसे definition पूछा गया है. The philosophical theory of knowledge, the philosophical theory of work, the philosophical theory of behaviors. What is epistemology? Yes, it is option A, the philosophical theory of knowledge. Yes. What piece of advice is being given to the child by the poet? क्या advice दे रहे हैं poet to the child? No one buys a ball back. Money is external. He's learning well behind his desperate eyes. The epistemology of laws. How to stand up. Knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up. What piece of advice is the child being given by the poet?
Senses first responsibilities, responsibility of loss, money is external. Okay. To stand up again after forgetting that ball. By saying all that, he's stand up बार बार लिखा है ना, how to stand up. तो the poet is trying to advise him to stand up again after forgetting his ball, after forgetting the loss he just now faced. Okay. What is the poet trying to tell us in this poem? That age once lost can't be regained, that thing once lost can't be regained, that all the balls are useless, none of these. Yes, save your precious time. Yes. That age once lost can't be regained. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. पोएट क्या बोलना चाहते हैं इस पोएम में कि एक एज एक बार चली गई तो वो वापस रीगेन नहीं हो सकती. एक पर्टिकुलर एज, जैसे आपकी इन्फेंसी है, आपकी टॉडलरहुड है, आपकी टीन एज है, ठीक है, वो एज अगर आपकी एक बार चली गई तो फिर वो वापस आपको नहीं मिलेगी. एक बार आपने, दैट इज ऑल्सो अ लॉस. ओके. Okay, everyone. So the poet is trying to say that age once lost can't be regained. आप अपने पर्टिकुलर एज में कुछ पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस करते हो, कुछ पर्टिकुलर लेसन्स मिलती हैं, और वो चीजें अगर उस टाइम पे एक्सपीरियंस नहीं की तो इट कांट बी रीगेन, वो वापस उस दूसरे उम्र पे मिलती नहीं है. कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली विद अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. लोगोरिया वर्ड्स वेल्थ के लिए क्या आएगा? जस्ट लाइक लोगोरिया इज एन एक्सेस ऑफ वर्ड्स. लोगोरिया क्या है? इट इज एन एक्सेस ऑफ वर्ड्स. वैसे ही लोगोरिया एक्सेस ऑफ वर्ड्स, वैसे ही वेल्थ इज एन एक्सेस ऑफ, wealth is an excess of money. Very good, very good, very good. Harshit and someone else also, many people are saying money. Okay, very good. Money. Why does the poet say money is external? Poet ऐसा क्यों बोल रहे हैं that money is external? He means money can buy everything. He means money can't buy everything. He means money can buy everything except balls. Option B. Yes, he means money can't buy everything. Yes. इसके साथ 5 क्वेश्चंस एंड होते हैं. नेक्स्ट इज फ्रॉम द फॉग. फॉग इतनी सी ही पोइट्री है, इसके ऊपर वी हैव सम क्वेश्चंस. State whether the following statement is true or false. By keeping the lines short, the poet is controlling the pace to make the reader slow down, thereby reflecting the slow rolling in of the fog. क्या ये statement true है या false है? अपनी लाइंस को बहुत शॉर्ट रख के, अपनी पोइट्री को बहुत शॉर्ट रख के पोएट अपनी पोइट्री का पेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रीडर्स उसको बहुत स्लो डाउन होके पढ़े एंड गेट अ चांस टू थिंक अबाउट इट. यस, इट इज ट्रू. यस. व्हाट डज द पोएट मीन बाय लिटिल कैट फीट? लिटिल कैट फीट से पोएट का क्या मतलब है? स्मॉल फीट लाइक दैट ऑफ द कैट, स्मॉल सॉफ्ट फीट ऑफ द कैट विच लीव मार्क्स इन द होम, स्मॉल लिटिल मार्क्स विच अ कैट लीव्स बिहाइंड इन द सैंड. ये नहीं है, ये नहीं है. The silent and careful steps of the fog which do not let anyone to know of its arrival. It is option D. है ना? The silent and careful steps of the fog which do not let anyone know of its arrival. Which poetic device used in second line? Which poetic device is used in second line? The fog comes on little cat feet. ऑन लिटिल कैट फीट से कौन सा पोएटिक डिवाइस यहाँ पे? yes, personification. It is also a metaphor because this thing is compared
द फॉग इज कंपेयर्ड टू अ लिटिल कैट फीट, ठीक है, बट यहाँ पे द एक्टिविटी एक्चुअली इज कंपेयर्ड, सो यू विल से पर्सोनिफिकेशन, जो एक कैट कर सकती है एक्टिविटी साइलेंटली मूविंग इन, दैट्स व्हाई इट इज मोर personified. The fog is personified rather than it is a metaphor. Okay. Supply 1 point to justify the following. The poet says that the fog is like a cat. एक point देना है to justify this statement. The poet says that the fog is like a cat. Why the poet says that the fog is like a cat? Why does the poet say fog is like a cat? It moves very slowly. I think you can answer this with this sentence. The silent and careful steps of the fog, which do not let anyone know of its arrival, just like cats. अब इस सेंटेंस को यूज करके वेरी स्मार्टली, ऐसे आप अगर आपको क्वेश्चन आता है ना, तो आप वो सेंटेंस भी यूज कर सकते हो. द फॉग कम्स ऑन इट्स लिटिल कैट फीट. दिस मीन्स द फॉग एंटर्स साइलेंटली जस्ट लाइक cat. Silently, just like a cat enters in a space, वैसे ही fog comes on its little cat feet. The word haunches means, ये जो word है haunches, you can see here on silent haunches. ये जो word है haunches, what does this mean? Legs, eyes, thighs, knees. haunches, knees है क्या? आई थिंक यहाँ पे हमको एक इमेज डालनी चाहिए थी. आपने देखा है कैसे बैठते हैं? इट्स एक्चुअली द थाई. haunches is the thigh. The way the cats sit, उनके जो ये legs होते हैं उनके सामने दिखते हैं ना, sitting on haunches is sitting on this. Okay, it is the thigh. इसी के साथ 5 क्वेश्चंस भी एंड होते हैं. 5 क्वेश्चंस पहले सेट में थे द बॉल पोएम में. अब यहाँ पे नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस. यहाँ से आपके 3 मार्कर्स शुरू होते हैं. बहुत सॉर्टेड इंग्लिश का पेपर है, बहुत सिंपल इंग्लिश का पेपर है, ठीक है. द पैटर्न इज वेरी सिंपल. ओके, ये जो फर्स्ट सेट है ऑफ 3 मार्कर्स, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आपको 5 में से एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं. चुबुकोव सेज of Natalia as if she won't consent. She's in love. Gad. She's like a lovesick cat. Would you agree? Find reasons for your answer from the proposal. यहाँ पे 5 questions होंगे, 5 में से 4 ही करने हैं. Okay, very good Ricky. सुन के अच्छा लगा, अब थोड़ा हो पा रहा है. Very good. Yes, Natalia is in love. This is clear by the way she behaves when she gets to know that Lomov came to propose to her. She starts weeping and asks her, haunches are the thighs. I will like कि आप लोग जाके एक बार चेक कर लो haunches क्या है. haunches thighs होते हैं. And sitting, cats sitting on haunches, ये भी एक बार image देख लो तो आपको ये चीज और clear हो जाएगी. How the cats sit and what haunches are. Okay, so the question for the answer for this question will be yes, Natalia is in love. This is clear by the way she behaves when she gets to know that Lomov came to propose to her. She starts weeping and asks her father to call Lomov so that she could confess or express her love for him. Why does the poet say that money is external? फिर से वही question है from the ball poem. अभी आपको उसको और अच्छे से देना है. Money is external because money can only buy all worldly or materialistic things. The poet wants to say that it cannot buy emotions, attachment, love, childhood, etc. Childhood is where age comes. Once these things are lost, they are lost forever and they never come back. How is the fog like a cat? What 3 things does the poem suggest? The fog comes slowly and silently like a cat. It sits on its haunches for some time, looking around and then moves away as it comes. Similarly, the fog spreads over the harbor and city for some time. Finally, it moves away like a cat. Comes silently and moves away silently. Yes, Trox OP. Yes, yes. Why did Maxwell call the air hostess the very queen of her kind? हमने ये क्वेश्चन आज
देखा था पहले भी। मैक्सवेल ने एयर होस्टेस को द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड क्यों कोट किया? मैक्सवेल कॉल्स द एयर होस्टेस द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड बिकॉज शी वाज वेरी सिंपैथेटिक आफ्टर लिसनिंग टू मैक्सवेल्स स्टोरी। ठीक है, एंड शी वाज वेरी हेल्पफुल, शी अंडरस्टूड हाउ ही माइट बी फीलिंग एंड देन गेव हिम परमिशन टू टेक द ऑर्डर आउट ऑफ द बॉक्स टू कीप ऑन हिज नीज। Paper has more patience than people. Do you agree, disagree? Give reason. From the diary of Anne Frank. Yes, according to me, Anne is right to perceive so. Paper is more patient than people. Because the diary is a silent recorder of Anne's thoughts, non-judgmental and patient. Yeah, patient. It cannot react to what or how she thinks. ओके इसके साथ 5 क्वेश्चंस एंड होते हैं। इस जगह पे आपको 5 में से 4 अटेम्प्ट करने होंगे। नेक्स्ट फिर से ये 3 मार्क का है। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस होंगे, 3 में से कोई 2 अटेम्प्ट करने होंगे, मतलब 3 मार्क के 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस है। फर्स्ट सेट में 5 में से 4 करने हैं, दूसरे सेट में से 3 में से 2 ही अटेम्प्ट करने हैं। बट देयर वाज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। ये है रिचर्ड एब्राइट की स्टोरी, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। व्हाट कलेक्शन डिड एब्राइट मेक? व्हेन डिड ही स्टार्ट मेकिंग कलेक्शन? फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड ही स्टार्टेड कलेक्टिंग थिंग्स। एब्राइट वाज inclined towards collecting butterflies, rocks, fossils and coins. He began as early as when he was in kindergarten. His mother of course was a driving force and remained his sole reason for his success. The best way to defend is to offend. But the same thing is not seen by Noodle. How does he manage to do that? सबसे बेस्ट तरीका डिफेंड करने का है, किसी की बातों से ऑफेंड हो जाओ, किसी की बातों से अपोज करो किसी की बात को। लेकिन ये सेम चीज हमने अप्रेंटिस नूडल में नहीं देखी। ही नेवर डिफेंडेड थिंक टैंक। हाउ डज ही मैनेज टू डू दैट? कैसे उसने किया ये? Noodle avoided. Yes, Noodle was sensible. Yes, Noodle avoided offending think tank, but at the same time he corrected his mistakes. वो avoid करता था think tank से offend करना, but साथ ही साथ वो think tank को correct भी करने की कोशिश करता था. This showed how sensibly he dealt with the situations. Okay. Sitting with knees bent, but actually haunches are the thighs. Ishita, haunches are the thighs. Whenever he had to say something contrary to what think tank said, he would present his thoughts by referring to him as being of no particular importance. This phrase is to be noted down, everyone. जब भी नूडल को कुछ भी ऐसा कहना होता था जो थिंक टैंक की बात को अपोज कर रहा है, थिंक टैंक की बात से अलग है, वो कैसे कहता था? He would present his thoughts by referring to them as being of no particular importance. ऐसे बोलता था, मेरी बात इज माई आइडिया इज ऑफ नो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस। ऐसे वो अपनी बातों को इंट्रोड्यूस करता था। Guilty mind is always conscious. Do you think the thief was on the contrary obliged to Anil? Substantiate your answer. जो गिल्टी माइंड, जो गिल्टी लोग होते हैं वो हमेशा कॉन्शियस होते हैं, हमेशा वो थोड़े से अलर्ट होते हैं, थोड़ा दिमाग उनका एक्स्ट्रा चल रहा होता है। तो क्या आपको ये लगता है ये बात बिल्कुल कॉन्ट्ररी पे है, ये बात बिल्कुल ऑपोजिट है ऑफ अनिल? ठीक है, थीफ द हरी सिंह वो बिल्कुल इस बात से कॉन्ट्ररी था। What do you think? No, I don't think Hari Singh was ever grateful to Anil. Rather, he lost no chance to dupe him and ditch him of his trust and money and ran away from there. ठीक है? ऑथर का नाम नहीं पूछते हैं आपसे, सिर्फ वो नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे फिर से 3 क्वेश्चंस हमने देख लिए जिसमें से आपको कोई भी 2 ही अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट इज
बट इफ यू वांट, इफ यू नो, इफ यू रिमेंबर द ऑथर्स नेम, आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हो. ओके आप अपने आंसर में जरूर ऐड कर सकते हो. Imagine a software engineer meets Buddha and communicates the modern age anxiety and the threat of livelihood. Suggest some philosophical tools which Buddha must have preached him to handle the same. So, Sermon at Banaras. फिर ये अब next 2 set of questions कैसे होंगे? 6 markers होंगे. After 3 markers 6 markers होंगे, जहां पे फर्स्ट 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 में से एक अटेम्प्ट करना है. अगला सेट ऑफ क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस होंगे, फिर 2 में से एक अटेम्प्ट करना है. ओके सो द क्वेश्चन इज, इमेजिन करो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बुद्धा से मिलते हैं और वो मॉडर्न एज एंजाइटी और थ्रेट ऑफ लाइवलीहुड, थ्रेट टू लाइवलीहुड के बारे में उनसे शेयर करते हैं. तो बुद्धा की जगह पे आप बताओ कि बुद्धा ने क्या उनको प्रीच किया होगा, क्या फिलोसॉफिकल टूल्स उनके साथ शेयर किए होंगे. Humans today aren't chased by predators. We are chased by uncertainty about the health of our loved ones, whether we'll have a job next week or next year, whether our company will go bankrupt, worries that provoke the same neurological and physical responses. Stress is a response to a threat in a situation. Anxiety is a reaction to the stress. Buddha must have preached renunciation. Our basic decency and sense of humor lies in what we do and how we do. According to Buddha, the basic view is that people are fundamentally good and healthy. It's as if everyone who has ever been born has the same birthright, which is enormous potential of warm heart and clear mind. The ground of renunciation is realizing that we already have exactly what we need, that what we have already is good. Every moment of time has enormous energy in it and we could connect with that. बहुत टेक्निकल आंसर है, बहुत फिलोसॉफिकल है, थोड़ा सब ध्यान देना इस आंसर पे. ओके नेक्स्ट, ये सेकंड क्वेश्चन है, आप देख रहे हो और के साथ है, मतलब जो पिछला क्वेश्चन था और इसमें से दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो. दिस इज फ्रॉम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ village. How were the services of the baker required on various occasions? इस बात को तो कभी भी हम इनफ बता ही नहीं सकते कि बेकर्स कितने इंपॉर्टेंट थे विलेज में, गोवन विलेज में. तो कैसे बेकर के सर्विसेज रिक्वायर्ड थे ऑन वेरियस ओकेजन्स. हाउ वाज ही इंपॉर्टेंट, हाउ वर हिज सर्विसेज रिक्वायर्ड on various occasions. Bakers were considered as indispensable and extremely important on any celebrations there in Goa. They had a unique place among the people. The bakers had a unique place among the people. They were known. इतना इंग्लिश ना हो पाएगा, जितना हो पाएगा उतना करो. रयान अहमद, जितना हो पाएगा उतना करो. आप अपने वर्ड्स में जितना जो लिख पाओगे वो करो. ओके They were known as peddlers in Goa. They had a peculiar dress earlier known as the kabai. Breads and cakes were as integral part of everyday life in Goa and were also consumed on special occasions. Thus, the baker was a man whose arrival was always eagerly anticipated by the adults and children. Bakers were very informal with the children. They were considered as friends and companions and treated as family members. ठीक है, देखो आपको यहाँ पे ऑप्शंस है, आपको यहाँ पे ऑप्शन है ए, मतलब जो 6 मार्कर्स है वहां पे भी ऑप्शन है. जो आपको ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है वो मत करो, जो आपको थोड़ा इजी लग रहा है, जैसे ये क्वेश्चन था ये इजी था, इसका क्वेश्चन आप बहुत, इसका आंसर आप बहुत सिंपल शब्दों में लिख सकते हो. ओके नेक्स्ट, फिर से ये नेक्स्ट सेट है ऑफ 6 मार्कर. फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन के बीच में ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक ही करना है. तो जो आपको इजी लगे वही सॉल्व करना. Our sins never go unpunished. Horace Danby ultimately had to go to prison. This shows that in spite of planning a crime intelligently and carefully, a criminal can't escape the law. Explain.
तो हमारे पाप कभी भी ऐसा नहीं है कि हम अपने पाप, हमने कुछ गलत काम कर दिया और हम बच जाएंगे, नहीं। हॉरेस डैनबी अल्टीमेटली प्रिजन में चला गया था। इससे समझ में आता है कि वो इतना प्लानिंग से अपने चीजों को इम्प्लीमेंट करता था, इतना इंटेलिजेंटली, इतने केयरफुली सब कुछ अपना, वो जो भी वो थेफ्ट करने जा रहा होता था वो उसको बहुत अच्छे से प्लान करता था बिफोर हैंड। स्टिल ही एंडेड अप इन द प्रिजन। तो इससे ये साबित होता है अ क्रिमिनल कांट एस्केप द लॉ। एक क्रिमिनल कभी लॉ से बच नहीं सकता है। इस बात को एक्सप्लेन करो। जैसे अब इसको वो रेड, द लेडी, यंग लेडी इन रेड ने बेवकूफ बनाया, क्या पता वो भी बाद में किसी और सिचुएशन में फंस जाए। ठीक है। द पैशन ऑफ हॉरिस डैनबी वाज कलेक्टिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स. To satisfy this passion, he needed money and arranged it by robbing one safe every year and then secretly bought the books through an agent. Though he was an honorable person, but not as an honest one indeed, he loved collecting rare and expensive books. He robbed a safe every year to finance the purchase of these books through an agent. Thus, he was not completely honest. By stealing other people's valuables, he may have become successful, but he is actually a criminal. It cannot be justified that a person steals things and readers reflect their soft corner for his wrongdoings. He may be efficient in conducting his crime so that he is successful, but we still cannot appreciate his work. Ultimately, we need to think of the person who has been robbed, who would show their empathy to him. यस बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वैल्यू बेस्ड आने वाले हैं, तो बहुत मतलब वैल्यू बेस्ड भी होंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छे से लिखना है। मैं हर बार यही कह रही हूँ कि आपको विथ कॉन्टेक्स्ट टू द स्टोरी ही लिखना है। बहुत कोई अपने मन से मन घड़न बहुत ज्यादा कुछ भी लिख दोगे, ऐसा नहीं करना है। ओके। Bholi and Matilda both are distinct characters, wherein one gave importance to self-instinct and the other gave importance to her beauty. Okay? Assume they both meet each other at Bholi's wedding and had a conversation over the greed of Bishambar. Write this conversation as per your understanding of Bholi and the necklace. Matilda from the necklace and Sulekha from Bholi. तो आप उसको भोली ही एड्रेस करोगे. You may begin like this. Matilda is asking, are you fine now? Bholi says, yeah, much relieved. What about you, Matilda? I heard about your woes and miseries that you have had to undergo. My heart wrenched with pain. Matilda says, no, you should not. Actually, I am to confess that in this singular life, one should be contented with whatever she has. One should not cut his coat beyond his cloth. ठीक है, वही है, जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो, उसी के लिए ये फ्रेज है. But in my case, I always kept grudging against my destiny and had never been thankful to the Almighty that at least I was better than many. Bholi, yes, it can be reflected that way too. You really had to bear what you actually didn't deserve. I'm feeling so blessed that I'm now able to raise my opinion and find my own identity. I wanted you to be feeling proud of yourself since you are my friend. ठीक है. This is the last question. Everyone, ये सब, this is the part of some other data. इसके साथ आपका क्वेश्चन पेपर एंड हो जाएगा. ओके. समरी नहीं पूछते. स्वयं कुमार, समरी नहीं पूछते एग्जाम में. ओके. समरी नहीं पूछते. सिर्फ जितने हिस्से का सवाल पूछा गया है सिर्फ उतने ही हिस्से का जवाब दो. पूरी कहानी लिखने मत बैठना. सिर्फ जितना सवाल पूछा है उतना ही जवाब देना. ऑक्सन मेडोज किसका है, ये तो सवाल ही रह गया, इसका कोई जवाब नहीं मिला है. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. अभी इसके बाद देयर विल बी अ सेशन फॉर ग्रामर. ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं. That will be conducted by राजीव सर, नहीं, संजीव सर लेंगे वो सेशन. तो टेक अ ब्रेक एवरीवन वंस अगेन, और उसके बाद फिर से उस ग्रामर सेशन के लिए ज्वाइन करना.
अभी के लिए बाय बाय। आई होप सबको अपना पेपर समझ में आ गया होगा, पेपर कैसा आने वाला है, क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, हर एक क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है। कीप योर ब्रेन, कीप योर हेड वेरी लाइट, टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ अच्छा होगा, ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा होगा, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, अपने आप पे भरोसा रखो। ओके एवरीवन, बाय बाय।